देखिए दोस्तों, ये है हमारा स्पीकर का फ्रंट कवर। इसमें डबल मैग्नेट के साथ ये स्पीकर आता है। देख सकते हैं इसमें 2 मैग्नेट दी गई है। ये 12 ओम 3 वाट का स्पीकर आप देख सकते हैं, इस पर प्रिंट किया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये दी गई है इसमें पीसीबी असेंबली। इसी के थ्रू पूरा स्पीकर हमारा कंट्रोल होता है। ये देखिए, ये हमारा पीसीबी असेंबली का कवर। इसमें क्लिप बेस सिस्टम होता है, तो हमें इसको पुश करके बाहर की तरफ इसको हमें रिमूव करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से आपको इसको केयरफुली, सावधानी के साथ आपको इसको रिमूव करना है, क्योंकि इसमें वायर भी होते हैं आगे की तरफ लगे हुए। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी बटन कंट्रोल और ये हमारी फास्टनर क्लिप दी गई है इसमें, इसको होल्ड करने के लिए। साढ़े 6 इंच का इसमें सबवूफर प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। 4 ओम 40 वाट का ये हमारा सबवूफर है। Magnet is quite heavy and its quality is also very good. तकरीबन 3 इंच की ये मैग्नेट प्रोवाइड की गई है। अंदर सिर्फ इसमें वायर दिए गए और बॉक्स के अंदर कंपनी ने कुछ और नहीं प्रोवाइड किया है। तो ये है दोस्तों हमारा SA-D40 कंप्लीट डिसमेंटलिंग। हेलो फ्रेंड्स, इनसाइड व्यू ऑफ SA-D40 वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें।
So this is our subwoofer body. We are going to install. देखिए ये हमारी सोनी SA-D40 की न्यू PCB कंट्रोल बोर्ड भी बोल सकते हैं आप इसको। ये मैंने डायरेक्ट सोनी के सर्विस सेंटर से परचेज़ किया हुआ है। इसको आज हम इंस्टॉल करेंगे अपने स्पीकर में और पुरानी PCB को रिप्लेस कर देंगे न्यू से। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। So back assembly is completed. This is Fevicol and a paste. So finally check every connection and close the front cover. This Fevicol is used for pasting points with this cover. So we check all this. Simply push. This is speaker assembly. This is our front cover or mesh.